Hello dear students, welcome to your channel, and today in this video we are starting another example of case study, and here in this one case study we are doing beehive. Okay, beehive means madhumaki ka chhatta, and if you have seen it is in the shape of this, that means regular hexagon. Okay, so see the case study is given to you. Now what is the first part? What is the case study? See what is written here. A beehive is an enclosed cell structure in which some honeybee species of subgenus Apis live and raise their young ones. अपने बच्चों को पैदा करती हैं. In a regular, each cell is formed of hexagonal shape. तो हर एक cell जो है इसमें is in the shape of hexagon. Okay. So now what they are saying? In a regular hexagon, there are 6 edges. So see, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 edges are there. Then of equal length, taking O as the center, join all the vertices of the center to the center. Similarity of triangles. Now what is similarity? तो हमने सबको join कर दिया. अब now there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles are formed. अब इसमें one more thing is given to you. It is given from in case study only. 2 triangles are said to be similar if their all the corresponding sides are equal and all the corresponding angles are equal and all the corresponding sides are in the same proportion. ठीक है, ये होता है सिमिलरिटी का वो डेफिनेशन इज गिवन टू यू कि अगर सारे एंगल सिमिलर हो और एंगल सेम प्रोपोर्शन, साइड सेम प्रोपोर्शन में हो तो एंगल सिमिलर होता है. ओके, नाउ द फर्स्ट पार्ट आस्क्ड टू यू. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? सी देयर, फर्स्ट पार्ट इज ए पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ गिवन फिगर. ये जो गिवन फिगर है उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने हैं? हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर? 5, 6, 4, 3 और 8. ओके, सो नाउ सी regular hexagon is formed inside a circle. Okay, so when we will form 60 degree angle, we will divide the circle in 6 equal part. 60 degree angle, see these all are of 60, 60, 60, 60, 60. These all are the radius of this. So we have all the radius are equal. Okay, all the sides are equal. This is 60 degree angle, so these two sides are equal, so these two angles will also be equal. Okay, because क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया. तो अगर ये दोनों साइड इक्वल होगी तो x और x, तो अगर हम इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से कन्वर्ट करेंगे तो 60 + x + x is 180 डिग्री, so x you will get 60 डिग्री. ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास हर एक एंगल इसका कितना आ जाएगा? 60 डिग्री. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं. सो द फर्स्ट पार्ट इज find the number of equilateral triangles. So all the triangles are equilateral. So how many numbers of equilateral triangles are there? 6 equilateral triangles. Okay. B part, the area of 2 triangles are equal, then it is always. अगर 2 triangle का area equal है तो वो हमेशा क्या होंगे? Okay. The option is given to you similar. क्या वो similar होंगे? तो देखो अगर area equal है तो similar होना नॉट नेसेसरी, हमेशा के लिए पूछा है. कभी कभी तो अगर सिमिलर होंगे तो उनका एरिया इक्वल हो सकता है, लेकिन मे बी कोई ट्रायंगल इस शेप का है और कोई ट्रायंगल इस शेप का है, तो अगर उनका एरिया इक्वल आ सकता है, इट इज़ पॉसिबल. तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों सिमिलर ही हों. ओके, तो इट इज़ ऑलवेज, द ऑप्शन इज इट इज़ ऑलवेज कॉन्ग्रेंट. अगर जो ट्रायंगल्स हमेशा कॉन्ग्रेंट होंगे, ओवरलैप ईच अदर, तो वो हमेशा क्या होंगे? दे आर ऑलवेज the areas is always equal. So the correct option is your B, second option, congruent. Okay, second option is correct. Now the C part, how many triangles are similar in a given figure? अब देखो कितने triangles similar हैं. These two sides are equal, same these two sides are equal. These two equilateral triangle है तो all 3 sides are equal. ये भी सब, तो all sides of these are equal, तो सारी साइड इक्वल हो जाएंगी इसकी. So इसका मतलब क्या है कि ये साइड से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो साइड से ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर प्रूव हो जाएंगे. सो योर सी पार्ट इज, तो द बी पार्ट इज कॉन्ग्रेंट एंड सी पार्ट इज दे आर सिमिलर. बट हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर सिमिलर? तो 6 ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके, वेरी इजी. देन ना डी पार्ट, which similar property use for the similarity of triangle? कौन सी similar property यूज हो रही है? देखो side, this side is common, this side is equal and this side are equal because ये regular hexagon है.
तो साइड 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 सिमिलैरिटी, ठीक है, साइड 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 सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी इज योर करेक्ट आंसर. दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट. ओके, एंड द लास्ट पार्ट E is find the area of hexagon in each edge is a unit. ओके, is a unit. तो हमें एरिया निकालना है पूरे हेक्सागन का और गिवन है कि each edge is a unit. ओके, so how many hexagons are there? Regular triangles are there 6. Okay, so area of hexagon, 6 similar triangles is 6 into area of one triangle. Okay, so what is the area of one triangle? 6 into, अब एक triangle क्या है, equilateral triangle है ये सारे, so √3/4 into side का square. Side is, they are saying that the side is a unit, so side is a square. So this is the answer. 2 to the 4, 2 3 is 6, 3√3 to a square. Okay, so this is your correct answer. And which part is correct? Your fourth part is correct. So see there, the fourth part is correct. So this is the case study of beehive one. Okay, this is one of the question of case study. Next case study we will do in next video. Till then, thank you very much. Keep on seeing the video. Please like, subscribe the channel, and very important, do practice the questions. Thank you very much. Bye bye.